Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the nature and features of modern political analysis, right? The modern approach is fact based and lays emphasis on the factual study of political phenomena to arrive at scientific and definite conclusion. The modern approach includes sociological approach, economic approach, psychological approach, quantitative approach, stimulation approach, system approach, behavioral approach, Marxian approach, etc. See, there were two aspects of that. They attempt to establish a separate identity of political science by focusing on the real character of politics. They try to understand politics in totality, transcending its formal aspect and looking for those aspects of social life which influence and are influenced by it. Normative method generally refers to the traditional method of inquiry to the phenomena of politics and are not merely concerned with what is, but what ought to be issue in politics. Its focus is on the analysis of instruction as the basic unit of study. However, with the advent of industrialization and behavioral revolution in the field of political science, emphasis shifted from the study what ought to what is. Today, political scientists are more interested in analyzing how people behave in matter related to state and government. Then we studied traditional versus modern political approach. Most authors do not make a distinction between the term approach and method to study of political science as they are synonymous. However, Dr. J.C. Johari, an approach is a way of looking at and then explaining a given phenomena which include everything related to the collection and selection of evidence necessary for investigating and analysis of hypothesis. See, methods on the other hand are way of organizing a theory for application to data. Then according to Salvadori, method refers to the technical device used to gather data and a point of view of the specialist. Then according to Van Dyke, approach consists of criteria for selecting problem and relevant data, whereas methods are procedure for getting and using data. Then normative या फिर traditional approach. Normative approach to the study of politics is known as traditional approach. The method was to begin with cause and reach to the effect. So we will look at the meaning normative approach. The term normative is derived from the Latin word norma, means percept rule, carpentry square. The word norm means usually, typical or standard thing. Normative related to norms or standards. The central idea of normative approach is the subject is viewed and analyzed normatively, that is, there are certain standards, rules, and precepts which must find their application in political science. Then, norms are several principles which an authority cannot deny. The accountability of the authority is based on these norms and principles. Norms or normativeness is explained in terms of should and ought. Then central idea of normative approach. The central idea of normative approach is to the study of politics is politics or analysis of state or the function of state are to be viewed in the light of what ought to be rather than what they are. The normativeness want to give preference to should and ought to be. It wants the realization of certain universal values, norms, or principles through the machinery of state. Instead of asking how social policy decisions have come to be made, it asks instead how they ought to be made. Then the great adherents of the approach declared unambiguously that norms or principles are not to be ignored but they are to be implemented. Then political science is a social science. Its nature is different than physical science like
like physics and chemistry. Whenever we study the origin, evolution and development of political science, we find various aspects of nature of political science. Thus, we say that values, principles, or eternal ideas relating to politics or function of state constitute the central idea of normative approach to the study of politics. Then, moving forward, we'll look at the features of normative approach. The important features of this approach are as follow: idealistic and perceptive. The emphasis in this approach is on norms and ideas. See, यहाँ पे emphasize किस पे दिया है उन्होंने? The emphasis in this approach is on the norms and ideas. It does not concern itself with things as they are. See, अब क्या है? अब वो जो चीज़ जैसी है वैसी उसको कंसिडर नहीं करना है. It does not adopt a realistic view of political action and institution. See, अब यहाँ पे क्या है, जो रियलिस्टिक व्यू है वो अपन वो ध्यान में ही नहीं रख रहे हैं, वो अपन अडॉप्ट करना ही भूल जा रहे हैं. ये अभी रियलिस्टिक व्यू किसका? ऑफ पॉलिटिकल एक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस. थ्रू द एज ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स हैव फोकस्ड देयर आइडियाज एंड थ्योरीज ऑन व्हाट दे परसीव टू बी द आइडियाज ऑफ फॉर द स्टेट. सी, थ्रू द एजेस. बहुत सालों से क्या है, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है बहुत सालों से क्या है, ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव फोकस्ड देयर आइडियाज एंड थ्योरीज ऑन व्हाट दे परस्यू टू बी द आइडियाज फॉर द स्टेट. मतलब जो आइडिया स्टेट के लिए रहेगी, हाँ, उसी के ऊपर अपन फोकस करेंगे, वही अपन ध्यान में रखेंगे. They prescribe certain forms of conduct rather than describe events or facts. See, they prescribe certain form of conduct rather than facts and events. Facts and events को importance नहीं है, but code of conduct उसको importance दिया जा रहा है. This approach was inclined to ignore. See, ये जो approach है, इस approach ने क्या ignore किया? What is, क्या है, and give more importance to what should be. क्या है इसको इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ परसेप्टिव. प्लेटो, हेगल एंड ग्रीन इज सम ऑफ द आइडियलिस्ट थिंकर. देयरफॉर कुछ आइडियलिस्ट थिंकर्स के उन्होंने नाम बोले हैं. वो आइडियलिस्ट थिंकर्स कौन है? प्लेटो, हेगल एंड ग्रीन इज सम ऑफ द आइडियलिस्ट थिंकर जिन्होंने ये थॉट्स वगैरह बोले हैं. नाउ second point is value oriented approach. Normative thinkers emphasized ethical and moral values such as good, bad, just, unjust, etc. See, normative thinkers क्या है? They emphasized ethically and moral values. See, normative thinkers उन्होंने ethically और moral values बोले. moral values यानी क्या? क्या सही, क्या गलत है, क्या जस्टिस है, क्या अनजस्टिस है, इन सब का उन्होंने इम्पोर्टेंस बोला है और इस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है नॉर्मेटिव थिंकर्स ने. इट इज़ अ वैल्यू लोडेड अप्रोच. तो ये क्या बोल रहे हैं? ये एक वैल्यू लोडेड अप्रोच है. इट वॉज मोर कंसर्न विथ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी. से इट वॉज मोर कंसर्न विथ सेटिंग स्टैंडर्ड. अब ये ज़्यादा कंसर्न किससे था? इट वॉज मोर कंसर्न विथ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन and governance of society. Now the third one is the optimistic and utopian. Normative theories are based on the assumptions. See, ये जो normative theories है, they are based on certain assumptions. They believe that a better system is possible. See, ये जो normative है, they are working on some assumptions और वो assumption के basis पे they are saying that a better system is possible. We can have better system over here. Accordingly, normative thinker suggest the ways and means to achieve this better system. See, accordingly क्या है? ये जो normative thinkers है, they suggest the वो अपने को नए ways बोलते हैं
या दे कम अप विद डिफरेंट वेज एंड मीन्स so that we can achieve the goal what we want, and in that way we can have a better system. In that sense this approach is optimistic. See, अगर उस सेंस में आप देखने जाओगे तो क्या है, इन दैट सेंस ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज ऑप्टिमिस्टिक. एग्जाम्पल, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट. सी एग्जाम्पल क्या दिया है, प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट. ये प्लेटो के बारे में अपन ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, राइट? शायद लास्ट सेमेस्टर में अपन ने प्लेटो के बारे में पढ़ा था, और प्लेटो का आइडियल स्टेट कैसा रहना चाहिए एज पर प्लेटो, ये भी अपन ने लास्ट सेमेस्टर में देखा था पॉलिटिकल साइंस में. देन मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, institutional, formal and legal approach. Normative approach suggests that political science is the study of state and government. See, नॉर्मेटिव अप्रोच में क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हो, राइट, ये क्या है, इट इज़ द साइंस विच इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. बराबर ही है ना? हाँ, पॉलिटिकल साइंस किससे रिलेटेड है, स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि अपन पॉलिटिकल साइंस में जो भी पढ़ रहे हैं it is everything related to the state and the government. It studies the formal legal structure of political system. See, अपने को political science में क्या पढ़ने को मिलता है, state, government, then their formal legal structure of political system, यही तो सारा पढ़ रहे हैं अपन. आप पॉलिटिकल साइंस 11-12 से पढ़ते आ रहे हो. 11-12 में क्या पढ़ा आपने पॉलिटिकल साइंस में, यही पढ़ा ना, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हाँ, ह्यूमन राइट्स, देन गवर्नमेंटल स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, यही सब पढ़ा आपने पॉलिटिकल साइंस में. तो ये जो बोल रहे हैं वो सही बात ही बोल रहे हैं ना, वही चीज़ तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, राइट? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. It studies the formal legal structure of political system. Example, study of the origin of the state, function of state, structure of the government, provision about the rights, etc. See, study of the origin of the state, like state कैसे हुआ, क्या state function कैसे कर रहा है, फिर government structure state में क्या है. जैसे देखो, असेंबली, 2 लोकसभा राज्यसभा जैसे है, वैसे स्टेट में भी 2 असेंबलीज रहती है, राइट? तो कहीं कहीं स्टेट्स में सिर्फ एक ही असेंबली है, तो उधर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, देन प्रोविजंस अबाउट द राइट एक्सेट्रा, ये सब अपन पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में. देन मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, फ्रॉम प्लेटो, Aristotle, ancient Greek thinkers, to Rousseau, used philosophical deductive method in adopting the normative approach to make political inquiries. See, अभी प्लेटो, एरिस्टोटेली, रोसेलो, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, डोमिनेटेड बाय फिलोसोफर एंड हिस्ट्री. यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे बोल रहे हैं इट हैज़ बिन डोमिनेटेड बाय फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री. अब फिलोसॉफी और हिस्ट्री में किसने डोमिनेट किया, एंशिएंट ग्रीक थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटेली के पीरियड से लेके रोसेलो तक. दे यूज्ड फिलोसॉफिकल डिटेक्टिव मेथड. दे केम अप विथ सम फिलोसॉफिकल डिटेक्टिव मेथड इन अडॉप्टिंग द नॉर्मेटिव अप्रोच टू मेक पॉलिटिकल इंक्वायरी. सी, पॉलिटिकल इंक्वायरी करने के लिए दे अडॉप्टेड द नॉर्मेटिव अप्रोच. नाउ दिस वेर द फीचर्स ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच. अब फीचर्स है, सब कुछ क्या अच्छा ही रहेगा क्या इसमें, नहीं, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक बट ऑब्वियसली रहेंगे. जैसे हर सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, उसी तरह इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है. सो लेट्स लुक एट द लिमिटेशन. देखो, उन्होंने 5 अच्छे पॉइंट्स बोले और 5 बुरे पॉइंट्स बोले हैं. See, if you look at the features, what there are 5 good features, और limitations देखने जाओगे तो there are 5 limitations. Following are the limitations of the normative approach. They involve a high level of abstraction from reality. See, the real world is, see, first point क्या है, they involve a high level of abstraction from reality. See, the real world is complex, and such a principal approach to resolve day-to-day dilemma about behavior is unhelpful and ignore the real world context of decision maker. See,
अब क्या बोल रहे हैं, ये जो रियल वर्ल्ड है दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इफ यू अप्लाई प्रिंसिपल्स टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम, तो क्या हो गया, तो बिहेवियर क्या है, अनहेल्पफुल एंड इग्नोर हो जाएगा ना. लाइक सी वी हैव सीन दैट मैन कैसा है, मैन इज अ बिहेवियर, लाइक नो वन कैन प्रेडिक्ट हिम. तो यहाँ पे ये डिसीजन मेकर सारा इग्नोर कर रहा है. मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, they may be narrow in their application. They may be narrow in their application. The reductionist Citrique suggests that the focus on one particular aspect of ethics, such as rights or duties, reduce the complexity of ethical issues to one narrow parameter of reality when they are important. See, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, see the reductionist Citrique, what they suggest, they focus only on one aspect of ethics like राइट्स एंड ड्यूटीज़, इसको ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पे. बट उसके अलावा बहुत से एथिकल इश्यूज भी हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए. दे आर ओवरली एकेडमिक. परहैप्स द abstraction and narrowness are a reflection of theoreticians who live in a world, perhaps the rarefied ivory towers academic environment, that goes wrong and how to decide between the two. See, perhaps क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो abstraction narrowness है, they are reflection of theoreticals, right, who live in the world. फिर क्या है, उसके अंदर बहुत से environmental प्रॉब्लम रहते हैं, उनको अपन ने वैल्यू दिया है क्या, इतना नहीं दिया है, अपन ने उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. They are inhuman. Again, the principles are enucleated in the impersonal context in which decision making becomes formulaic and human relations, instinct and emotions are absent. See, फिर से क्या है, the principles are enucleated in an impersonal context जहाँ पे decision making becomes formulaic and human relations, instincts and emotions are absent over here. Then they involve perspective approach. The principle and the application suggest that ethical dilemma can be solved by a given set of rules, whereas true decision maker require a high involvement of individuals and ownership through using their own directions and judgment. See, the principle and the application. What they suggest that ये जो dilemma it can be solved by the living by the set of rules, और जो ट्रू डिसीजन मेकर्स है उसको क्या लगता है, इट रिक्वायर्स अ हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ओनरशिप थ्रू विच यूजिंग देयर ओन डिस्क्रिप्शन एंड जजमेंट. सेकेंड इज द एम्पिरिकल या फिर मॉडर्न अप्रोच. The Industrial Revolution and other social problem pressed political scientists for solution. See, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया और बहुत से सोशल प्रॉब्लम भी आ गए, इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव टू कम अप विद सम सॉल्यूशन. इन द 20th century, political scientists were unable to find solution to real life political problem. See what they found it difficult to face the real life problem. At this stage, the interest in political speculation declined. इस स्टेज पे क्या हो गया, ये जो इंटरेस्ट है इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इट डिक्लाइन. इन द बिगनिंग द एम्पिरिकल अप्रोच वाज व्यूड एज अ सप्लीमेंट्री. सी, स्टार्टिंग में क्या था, इन द बिगनिंग क्या है, द empirical approach was viewed as a supplementary to the normative approach. But after 1940s क्या हो गया, the empirical approach monopolized the study of politics. See, but after 1940 क्या हो गया, ये जो empirical approach है it got monopolized the study of politics. Graham Wells, Arthur Bentley, Charles Merriam are some empirical thinkers. See, empirical thinkers के नाम बोले हैं. कुछ empirical thinkers क्या थे, ग्राहम वेल्स, देन अर्थर बेंथलीज, चार्ल्स मेरिडियम्स are some empirical thinkers. Graham Wells in his book Human Nature in Politics
introduced greater realism and psychological dilemma dimension in political studies. See, ग्राम वालास उन्होंने अपनी बुक में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स व्हाट दे डिड, they introduced greater realism and psychological dimension in political studies. Arthur Bentley in his book introduced sociological dimension in politics. See, Arthur Bentley क्या है, उन्होंने अपनी बुक में sociological dimension in politics introduce किया है. Moving towards the next page. Meaning of empirical approach. Empirical political theory focused on the observation and explanation of political phenomena and involves formulating and testing hypotheses through experimentation. See, empirical political theory क्या है? It focuses on the observation and explanation of political phenomena and it involves formulation and testing hypotheses through experimentation. Normative political theory focused on what ought to be and explore the values and ideas of the political science. See, normative political theory क्या है? It focuses on what ought to be and explore the values and ideas of the political system. In the simplest term, empirical political theory is focused on explaining what is through observation. See, अगर simplest term में देखा जाओगे तो empirical political theory what it does, it focus on explaining what is through observation. Like observation से आपको क्या मिल रहा है. In this approach, scholars seek to generate a hypothesis. See, in इसी approach में क्या है? What does this scholar seek? The scholar seeks to generate a hypothesis which is proposed explanation for some phenomena. Okay. In this approach, scholar seeks to generate a hypothesis which is proposed explanation for some phenomena that can be tested empirically. Okay. जो अपन टेस्ट कर रहे हैं empirically. After formulating a hypothesis, a study will be designed to test the hypothesis. See, अभी आपके हाइपोथेसिस वगैरह आपने बना लिए. आपके हाइपोथेसिस बनने के बाद स्टडी विल बी डिजाइंड. हाँ, अभी एक स्टडी किया जाएगा जिसके अंदर आपके हाइपोथेसिस सारे टेस्ट किए जाएंगे. यहाँ पे देन आइडियाज ऑफ एम्पिरिकल अप्रोच. सी, अभी आइडियाज ऑफ एम्पिरिकल अप्रोच क्या है उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे. What has dominated? See, political theory in the 20th century is not normativism, but others conception known as empirical political theory, which drives the theory from empirical observation. See, what has dominated? अभी कुछ तो dominate किया political theory को in the 20th century. It is not normativism, but ये क्या है? Concept known as empirical political theory. ये जो कंसेप्ट आया था एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी उधर से सारा डोमिनेट हुआ है. विच ड्राइव्स थ्योरीज फ्रॉम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी refuses to accord the status of knowledge to those theories which induce in value judgment. See, empirical political theory क्या है? It refuses to accord the status of knowledge to those theory which induce the value judgment. Naturally, therefore, normative political theory is debunked as a mere statement of opinion and preferences. Naturally, क्या हो गया फिर? ये जो normative political theory है, it is debunked as a mere statement of opinion and preferences. The drive of value free theory stated in order to make the field of political theory scientific and objective and hence a more reliable guide for action. See, the drive for value. See, now the drive for value free theory stated in order to make the field of political theory scientific and objective and hence a more reliable study for action. This new orientation came to be known as positivism. Under the spell of positivism, political theory set out to attain scientific knowledge. See, on this basis, under this spell of positivism,
Political theories have been attended scientific knowledge about political phenomena based on the principle which could be empirically verified and proved. Thus, they attempted to create a natural science of society. See what they did? They tried to create a they tried to we were they created a natural science of society, and this endurance philosophy was made to mere adjunct of science. Such an account of theory also portrayed the role of theories as a disinterested observer, purged of all commitments and drained of all values. See, such an account of theory क्या है? Was also portrayed the role of theories and disinterested observer, plugged off all communist and drain of all values. This empirical project in political theory was premised on the empirical theory of knowledge, which claimed to have full-blown criteria to test what constitution truth and falsehood. See, ये जो empirical project and political theory, उसके अंदर क्या है, नॉलेज वगैरह मिला, बट इट वॉज अ क्राइटेरिया टू टेस्ट कि बाबा सच क्या है और गलत क्या है. द एसेंस ऑफ दिस क्राइटेरिया इज लॉस्ट इन द एक्सपेरिमेंटेशन, द वेरिफिकेशन प्रिंसिपल. सी, अब ये जो क्राइटेरिया है, सब जो भी ये क्राइटेरिया वगैरह है, इट अभी क्या था, उस बेसिस पे अपने को सारे प्रिंसिपल्स वेरीफाई वगैरह करने हैं. We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll finish the topic. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.